Hello viewers, I am Tarang Kumar Boonwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For better understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. We will be discussing about related important questions, feasibility and applications. Let's start the video. Hello students, hello everyone, welcome back to the channel. In today's session, we'll start with a new unit which is about foundations. So the first type of foundation that we are going to study is strip foundation, also known as wall footing or wall foundation. A footing supporting a wall is known as strip foundations. As shown in the figure below, it is a continuous strip, either flat or stepped or sloping, which distributes the load of wall on the soil. ये वॉल है और इसको सपोर्ट करने के लिए फुटिंग नीचे की ये अगर हम इसका एलिवेशन देखें तो कुछ इस तरीके से ये सॉइल प्रेशर नीचे से ये फुटिंग और ये सपोर्ट कर जिस वॉल को सपोर्ट करती है वो वॉल. So next we'll move to a design numerical of this type of footing. So the question goes like this: design a footing for 250 mm thick masonry wall which supports 200 kN per meter at surface state and consider unit weight of soil WE as 20 kN per meter cube, angle of repose that is phi as 50 degree, allowable bearing capacity of soil Q0 as 150 kN per meter square, and concrete of grade is M20, grade of steel is Fe 415. So first step is to determine depth of foundation, and it can be determined using the formula H is equals to Q0 upon WE into 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi whole square. So Q0 is given as 150, WE is 20, given in the question, the value of phi is 30 degree. So using this, we'll find H, which is the depth of foundation. So it comes out to be 0.833 meter. So on safer side, we'll consider it 1 meter. So the base of footing is located at a depth of 1 meter below which soil is not subjected to seasonal volume changes and caused by alternate wetting and drying cycles. Next step is to determine the width of footing. So it is found by considering unit length of wall as follows. Wall की unit length मान के इसको निकाला जाता है. So width of footing B is given by this formula. Load on wall P plus assumed self weight of 0.1 P divided by Q0. So load on wall is 200. ये क्वेश्चन में जैसे कि ये गिवन है 200 kN per meter और इसका 0.1 times. So 200 plus 0.1 200 upon Q0 is 150. So this value comes out to be 1.467 meter, and we'll consider it 1.5 meter. Next step is to determine thickness of footing. So the thickness of footing may be governed either by moment or by shear, and it can be determined as follows. Thickness of footing based on moment. The effective thickness of footing may be determined considering singly reinforced balance section as follows.
दो तरीके से दो कंडीशंस को कंसिडर करके थिकनेस ऑफ फुटिंग हम निकाल सकते हैं. फर्स्ट इज बाय यूजिंग मोमेंट्स और बाय shear. तो अगर हम based on moments find करते हैं, then this is given by this formula LD square is equals to mu max upon 0.36 FCK multiplied by XUL upon D minus 1.1 minus 0.416 XUL upon D, where L is length of ball and which is taken as 1 meter as described here कि हमें 1 मीटर मानना है. Mu max is maximum ultimate moment per unit length at critical section halfway between the middle and edge of wall. So maximum ultimate moment per unit length critical section पे ही, and it is given by this formula Pu into 0.5 B minus 0.25 BW whole square upon 2. Pu is net ultimate upward soil pressure, and it is given by this formula load factor multiplied by load on wall per unit length divided by B. So load factor is 1.5, load on wall per unit length is 200 kilonewton per meter, it is given in the question, and if we divide by B, which is 1.5, so it comes out to be 200 kilonewton per meter square. Next is thickness of wall BW, and it is 0.25 meters. Thickness is also given in the question. Now using all these values, we will find the value of mu max. So in this formula, we'll put all the values. Pu came out to be 200, B we found to be 1.5, BW is 0.25 meter, and in this way we'll get the value of mu max, which is 47.266 kilonewton meter per meter. Now we'll find the value of XUL upon D. So this value is 0.479 for steel of grade Fe415. Fe415 के लिए इसकी वैल्यू कोड से हम ले लेते हैं, जो कि वैल्यू आ जाती है 0.479. तो अब ये जो फॉर्मूला था LD स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो L क्योंकि हमने यूनिट लेंथ माने, सो इट बिकम्स 1 मीटर, दैट इज 1000 mm. D स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमें D स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालनी है. और ये जो वैल्यू है यहाँ पे mu max, ये अभी हमने निकाला है 47.266, एंड रेस्ट ऑल पुटिंग द वैल्यूज. ये 0.479 अभी हमने यहाँ से निकाला, XUL upon D. So in this way we'll get the value of D from here, which is 130.83. Now next is finding thickness of footing based on shear. This was thickness based on moments. Now we'll find thickness based on shear. The effective depth of footing may be determined by considering that the shear is resisted without shear reinforcement as follows. तो ये assume करके माना जाता है इफेक्टिव डेप्थ फुटिंग की कि जो शेयर है वो बिना शेयर रिइंफोर्समेंट के रेजिस्ट हो रही है. सो दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला Vu max is equals to tau UC LD, and D is equals to Vu max upon tau UC L, where Vu max is ultimate shear per unit length of wall at critical section at a distance D from the face of wall. तो अल्टीमेट शेयर यूनिट लेंथ पे वॉल की, जो भी क्रिटिकल सेक्शन पे एक्ट कर रही है डिस्टेंस डी पे वॉल के फेस से. So this is given by the formula Pu 0.5 B minus
0.5 BW minus D. So putting in all the values, PU found out to be 200 and B is 1.5, BW is 0.25 given, and accordingly we'll find the value of D from here. So it comes out to be 125 minus 200 D, which is the value of PU max. Now tau UC is the shear strength of concrete in foundation slab, and it is given by K, which may be taken as 1.2 for assumed total depth 200 mm, total 1.11.1 into shear strength of concrete, which may be taken at its minimum value of 0.36 Newton per mm square. Or table 4.1, on consideration that flexural reinforcement shall be small due to large depth of footing based on shear consideration. So this value comes out to be 0.43 Newton per mm square. And L is length of wall, which may be taken as 1 meter again. तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद we get the value of D from here. So VU max is 125 minus 200 D from here, and it is divided by tau UC. The value is 0.43 upon L. So D comes out to be 0.19841 meter or 198.41 mm. So this value is greater, so we'll consider this value. Therefore, effective depth of footing is governed by shear because this is greater than the previous value. So we'll consider D as 198.41 mm. Now we'll get the value of overall depth, that is capital D. So it will be 198.41 plus clear cover of 40 mm plus assumed dia of 12 mm of reinforcement bars divided by 2. That means half of the assumed dia. So this value becomes 244.41 mm. For ease and convenience, we'll use the value of D as 250 mm. Therefore, effective depth will be 250 minus 40 minus half of the dia of bar. So it will be 204 mm. Next, we'll design for moment. That is, area of steel for maximum ultimate moment at critical section as computed above is determined with the help of design aid as this formula. Area of steel is 715 mm square per m, and it should not be less than AST minimum. So area of steel इससे value कम नहीं होना चाहिए, and this value should not be less than 0.85 L D upon FF, or should not be less than 0.85 into 1000 into L value is 1000, D value is 204, and Fy, this value is 415, grade of steel is 415. So this comes out to be 417.83 mm square. तो ये सही है, ये वैल्यू से कम नहीं है. So we'll provide 12 mm dia bars at 150 mm center to center spacing, and this spacing, it should not be less than, it should be less than or equal to 3 times the dia, 3 times the effective depth. So which is 3 into 204, which is 612 mm, or 450 mm, whichever is less. इन दोनों में जो भी वैल्यू कम है उन्हें उसे कंसीडर करना, तो हम ऑटोमेटिकली 450 mm कंसीडर कर लेंगे. गिविंग एरिया ऑफ स्टील एज 754 mm square per mm as shown in this figure. These bars are extended up to the end of footing, and its length from the section of maximum moment shall not be less than the development length of bar. तो ये जो बार्स हैं ये बिल्कुल जो फुटिंग है उसकी एंड तक जाएंगे, और
जो मैक्सिमम मोमेंट है उसकी वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार से कम नहीं होगी। Therefore 0.5b minus 0.5 small b minus side face clear cover of 25, and when it should not be less than LD. So putting in all the values, 0.5, b is 1500, minus this value 0.25 into 250 minus 25. This is the side face clear cover, and it should not be less than 0.87 fy5 upon 4 tau bd. This value becomes 62.5, and it should not be less than, putting in all the values here, so this is the dia of bar 12, and it comes out to be 564 mm. Hence it is marginally safe in bond. It shall be safe in bond by providing 90-degree bend at end of bars. तो ये safe है bond में, इसलिए हम एक 90 डिग्री का बेंड दे देंगे जिससे कि और ज्यादा सेफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से सेक्शन बनेगा। ये वॉल है जिसको सपोर्ट करना है, उसकी विड्थ है। इसके अलावा ये फाउंडेशन की इफेक्टिव डेप्थ हो गई, ये इसका कवर हो जाता है 40 mm का, ये इसकी विड्थ हो जाती है, और ये 12 डाया के बार्स दिए हुए 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे, और ये 10 mm डाया के बार्स हैं जो कि 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेस्ड हैं। और अगर हम इसको प्लान देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसका जो सेक्शन ए का इधर से निकाला हुआ है, ये वाला पोर्शन। सो ये वाला जो बार है ये है 10 mm डाया बार्स, और इस डायरेक्शन में है 12 mm डाया बार्स। Now distribution reinforcement in the longitudinal direction is 0.12% of gross cross-sectional area. तो longitudinal direction में distribution reinforcement की value 0.12% of gross cross-sectional area होती है. So it becomes 0.12 into LD. So 0.12% of gross cross-sectional area would be LD. So L is 1000 for unit meter, D is 250, and it becomes 300 mm square per mm. तो longitudinal direction के लिए, so we'll provide 10 mm dia at 250 mm cc जैसा कि ये यहाँ पे provided है, and it should be less than 5D or 450 mm whichever is smaller. तो इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कंसिडर कर लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग AST की वैल्यू 314 mm स्क्वायर पर मीटर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में मेंशन्ड है। Now next and final step is to check for shear. For resisting shear without shear reinforcement, BUC should be greater than or equal to BU max, and BUC is shear strength of concrete. K tau C LD. The value is of BUC is given by this formula, where K is 1.1 if the value of B is 250 mm, and tau C is 0.4176 Newton per mm square. It is from table 4.1. If the value of B is 100 AST upon LD, that is 0.37. So in this way, BUC becomes K, which is 1.1, tau C, it is from table 4.1, which is 0.4176. The value of L is 1000 mm and D is 204. So this value comes out to be 93.71 kilonewton. And BU max from here becomes
PU into 0.5B minus 0.5 BW minus D, and this value becomes 84.2, and this value, as we can see, is less than VUC. That means PUC is greater than VU max, so we will not require shear reinforcement. Next, we'll move to isolated footing. Footing supporting a single column is known as isolated footing, as shown in the figure below. It may be of uniform thickness with top surface leveled or top surface sloping or with a pedestal. It is used where the load on column is small and columns are not closely spaced. They may be square, rectangular, circular, or of any shape. तो जब हमें एक सिंगल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए एक फुटिंग बनानी होती है तो वो आइसोलेटेड फुटिंग होती है। या तो ये स्लोपिंग सरफेस हो सकता है जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, या तो ये इस तरीके से लेवल्ड सरफेस से बनाया जा सकता है, जैसे ये कॉलम है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो फुटिंग बनी है, या तो ये लेवल्ड सरफेस से बनाई जा सकती है, या ये इस तरीके से स्लोपिंग सरफेस से बनाई जा सकती है, या फिर इसके अलावा लेवल्ड सरफेस के ऊपर ये पेडेस्टल दिया हुआ और पेडेस्टल के ऊपर फिर कॉलम है, और इसकी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर कोई भी शेप हो सकती है। Next is combined footing. When a footing is supporting two or more columns, then it is called as combined footing. जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये दो कॉलम्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए एक कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर दी, और इस केस में भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है कॉलम के ऊपर लोड्स की वो सेम होगी, इसी वजह से दोनों को सेक्शन को सेम रखा गया। इस केस में टेपर कर दिया क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। Combined footing supporting two columns may be used for columns on property line, and isolated footing for column on property line would extend beyond the property line, which can be avoided by combining such footing with that of interior column. And such footing may be trapezoidal or T-shaped in plan, or may consist of isolated footing connected with a narrow beam as shown in the figure. तो अगर हमें प्रॉपर्टी लाइन के अंदर रखना है तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। आइसोलेटेड फुटिंग में कई बार चांसेस होते हैं कि प्रॉपर्टी लाइन के बियॉन्ड चली जाती है फुटिंग, उस केस में ये बेस्ट अप्रोच है। तो ये एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है जो कि कंबाइंड है, ये ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है। उसी तरीके से ये एक टी शेप कंबाइंड फुटिंग है, और ये जैसे कि हमने डिस्कस किया एक ये नैरो बीम दिया हुआ है इसके ऊपर, और ये कंबाइंड फुटिंग है। जैसे ये इसके लिए, इस कॉलम के लिए ये वाली फुटिंग, इस कॉलम के लिए वाली फुटिंग, और इनके बीच में नैरो बीम। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये टी शेप बीम, टी शेप फुटिंग है, ये ऐसे दिखेगी, और जो स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, जैसे कि ये दो कॉलम के बीच में ही कनेक्शन बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन। For very low bearing capacity of soil or for very high loads on columns, the strips or isolated footings merge result in mat foundation. It is a single large continuous footing supporting the entire structure. Its differential settlement is considerably reduced being a continuous footing. अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है या फिर कॉलम पे हाई लोड्स आने वाले हैं तो स्ट्रिप या फिर आइसोलेटेड फुटिंग यूज की जाती है, और इस केस में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है वो काफी कम हो जाता है। So this is how mat or raft foundation looks like. ये इंडिविजुअल कॉलम्स है और उसको सपोर्ट करने के लिए ये राफ्ट। इस केस में कॉलम्स के नीचे पेडेस्टल है और पेडेस्टल के नीचे फिर फाउंडेशन है। ये भी एक राफ्ट फाउंडेशन ही है।
इस केस में जो फाउंडेशंस हैं, ये जो कॉलम के नीचे वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे थिकन किया हुआ है, तो मैट थिकन अंडर कॉलम। एक ये वाली अप्रोच भी होती है। इसके अलावा बीम स्लैब सिस्टम बना के मैट फाउंडेशन में जितने भी ये जो कॉलम्स हैं इंडिविजुअल, इनके बीच में बीम और स्लैब जैसा सिस्टम बना देना। सो दिस इज मैट फाउंडेशन। So this was all with today's session, and in next session we'll continue with this topic, that is general design considerations. Till then, keep studying, have a great time, and we'll meet in the next lecture. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.